अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हमारा आज का Q&A सेशन है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, कोर्स से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, या जो है ना वो फ्यूचर में डेवऑप्स और क्लाउड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मल्टीपल अदर जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर जो है ना फ्यूचर जो है ना वो क्या है, तो कोई भी या कैरियर गाइडेंस के हवाले से आप जो है कुछ क्वेश्चन जो है ना पूछ सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जिनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आती वो इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं, और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू में क्वेश्चन जो है ना पूछ सकते हैं। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द उर्दू, इट्स ओके, यू कैन आस्क इन द इंग्लिश, आई विल आंसर इन द इंग्लिश एज वेल। ओके, सो किसी क्वेश्चन है, कोई सवाल आप पूछ लीजिए। ये माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, या फिर जो है ना वो आप जो है ना वो चैट पे भी जो है ना पूछ सकते हैं। चलिए इतनी देर आप क्वेश्चन पूछें, साथ साथ मैं जो है ना अपडेट शेयर कर दूं। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर सिर्फ पहले सिंगल क्लाउड की ट्रेनिंग जो है ना वो अवेलेबल थी। तो लास्ट वीक से हमारी जो है मल्टी क्लाउड की ट्रेनिंग भी जो है ना वो स्टार्ट जो है ना वो हो चुकी है। तो इसके अंदर जो है ना वो अजोर क्लाउड जो है ना वो शामिल है। पहले हम सिर्फ आपको AWS क्लाउड जो है ना पढ़ा रहे थे, और अब जो है ना वो हमारी जो दूसरी ट्रेनिंग आई है मल्टी क्लाउड की, उसके अंदर AWS प्लस अजोर क्लाउड जो है ना वो दोनों शामिल है। और दोनों हमारी ट्रेनिंग जो है ना जो रेडियो ट्रेनिंग है। तो अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारी दोनों जो सिंगल क्लाउड मल्टी क्लाउड के जो बैचेज हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं मंडे से, 10 अगस्त से। तो लेकिन आप अभी भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन ओपन है कल तक। उसके बाद मंडे से फिर हमारे जो न्यू बैचेज है, हर महीने हमारा तकरीबन एक बैच जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप जो है ना वो अगले महीने जो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें जो है ना वो एडमिशन जो है ना वो ले सकते हैं। तो आप क्लिक करेंगे ब्राउज कोर्सेज पे। तो यहाँ जो है ना जॉब रेडी ट्रेनिंग्स का सेक्शन है हमारे होम पेज पे। तो यहाँ दो ट्रेनिंग्स हैं, ए पावर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग विद सिंगल क्लाउड। इसके अंदर डेवऑप्स के टूल, AWS की क्लाउड सर्विसेज डिटेल में विद प्रैक्टिकल हैंड ऑन लैब्स, AWS क्लाउड का अकाउंट, जॉब असिस्टेंस, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग, हम आपको डिटेल में इसमें करवा रहे हैं। तो आप जो है ना वो अगर इसको ओपन करें, नो लॉ पे क्लिक करें, डिटेल में इस ट्रेनिंग की डिटेल आपके पास आ जाती है। इसे हमारे पास मल्टी क्लाउड बेस पे आप क्लिक करेंगे नो लॉ पे, तो आपके पास की डिटेल जो है ना वो आ जाती है। तो आप क्लिक करें एक्सप्लोर करिकुलम पे, यहाँ डिटेल में करिकुलम मौजूद है। उसके बाद आप टॉपिक वाइज जो है ना करिकुलम देखना चाहते हैं, तो आप व्यू मोर डिटेल कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो हर क्लास वाइज, टॉपिक वाइज आपके पास डिटेल में जो है ना कंटेंट जो है ना वो आपका आ जाता है, पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक। जो हम आपको जो है ना वो पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, जो लैब्स करवा रहे हैं, जो हम आपको प्रैक्टिकल करा रहे हैं, जो सर्विसेज, जो टूल पढ़ा रहे हैं, तो उन सारों की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ जो है ओपन हो जाती है, सिंगल क्लाउड में भी और मल्टी क्लाउड दोनों के अंदर आप देख सकते हैं। तो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं कल तक, तो आप जो है बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद फिर मंडे से जो हमारा नेक्स्ट बैच है उसमें जो है ना वो आप एडमिशन जो है ना वो लेंगे। इसके हमारे जो न्यू अपडेट है उसके अंदर हमारे जो शॉर्ट कोर्सेज हैं वो इस वक्त जो है ना वो आ रहे हैं। तो आप क्लिक करें ऊपर मेन्यू में, हेडर में हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास मल्टीपल शॉर्ट कोर्सेज के वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी उनको लिनक्स आती है, या उनको क्यूबरनेटीज डोकर ऑलरेडी आता है, लेकिन वो टेराफॉर्म और एंसिबल को सीखना चाहते हैं। तो आप सिर्फ हमारे टेराफॉर्म एंसिबल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन का कोर्स है, ये शॉर्ट कोर्स है, जॉब रेडी कोर्स नहीं है, लेकिन हमारा शॉर्ट कोर्स है। लेकिन इसके अंदर भी हम आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल लैब्स के साथ हम आप इसमें डिटेल चीज़ें कवर करवाएंगे। और हमारे शॉर्ट कोर्सेज में उसमें भी हम आपको एजेंटिक एक एनवायरनमेंट, लैब्स, ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारे मंथली बेसिस पे कोर्स होंगे कि आप इनरोल करेंगे, आगे पास 1 महीने की एक्सेस होगी, और 1 महीने के बाद आपका एक्सेस जो है ना खत्म हो जाएगी। तो जो है ना वो आप जो है ना वो फिर मंथली बेसिस पे आपको एक्सेस मिलती रहेगी। वो स्टूडेंट जिनका बिल्कुल भी बैकग्राउंड IT का नहीं है, तो ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल का शॉर्ट कोर्स है। तो ये भी हर महीने एक कोर्स रिलीज होगा। और ये जो है ना वो जो स्टूडेंट बिल्कुल नॉन IT बैकग्राउंड के वो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो हमारे शॉर्ट कोर्सेज हैं, और ये जॉब रेडी नहीं है, इसमें जॉब असिस्टेंस नहीं है। हाँ, हमारी कम्युनिटी है, वीकली लाइव सेशन आ रहे हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी आप जो है ना पूछ सकते हैं। और ये भी हमारे शॉर्ट कोर्सेज भी ये प्रैक्टिकल लैब्स के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि हमारे
जो जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। उसके बाद हमारा एआई पावर्ड एचआर रिक्रूटमेंट का भी जो है ना कोर्स अभी कमिंग सून है, ये भी चलाने वाला है कि वो स्टूडेंट जिनका कोडिंग में या डेवलपमेंट के अंदर या डेवऑप्स क्लाउड में एआई के अंदर वो ना आगे अपना कैरियर परसू नहीं करना चाह रहे लेकिन उनके पास नॉलेज है, तो वो एज अ टेक्निकल रिक्रूटर काम करना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जिनको टेक्निकल रिक्रूटर की ज़रूरत है, तो उनकी एचआर प्रोसेस को मैनेज करना और उसके बाद जो उनकी हायरिंग है उसको प्रॉपर मैनेज करना। तो एंड टू एंड जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, एचआर का प्रोसेस है, वो इस ट्रेनिंग में आप डिटेल में सीखेंगे कि वो स्टूडेंट जो कि डेवऑप्स के अंदर क्लाउड में इसमें जो है ना वो जाना नहीं चाहते लेकिन नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक्निकल रिक्रूटर जाना चाहते हैं तो आप इंटरव्यूज लेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपर के, डेवऑप्स के, क्लाउड के, तो आपके पास नॉलेज होना इन टूल्स का ज़रूरी है। बाकी डिटेल में एक्सपर्टीज होना आपके पास ज़रूरी नहीं है। तो आप एज अ टेक्निकल रिक्रूटर भी काम कर सकते हैं। इसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़रूरत है टेक्निकल रिक्रूटर की भी। तो आमतौर पे इस वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं, जो स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के, सॉफ्टवेयर के, वो एचआर और जो फील्ड है रिक्रूटमेंट की उसमें नहीं जाते। तो लेकिन आप लोग जो लोग कोडिंग के अंदर और आईटी में इंटरेस्टेड नहीं है अपने कैरियर बनाने में, तो वो एचआर और जो फील्ड है रिक्रूटमेंट की इसमें जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री जो है ना वो इस वक्त टेक्निकल रिक्रूटर जो है ना वो हायरिंग भी कर रहे हैं। तो लेकिन बहुत कम लोग जो है ना स्पेशली टेक्निकल लोग हैं वो बहुत कम इस फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को इसकी भी ज़रूरत है। तो ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल में या अगले साल हमारा यही पावर्ड एचआर है रिक्रूटमेंट का, ये भी ट्रेनिंग जो है ना हमारी आ जाएंगी। और हमारे शॉर्ट कोर्सेज हैं वो जो है ना ओरिजिनल उर्दू लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे। बाकी मल्टीपल लैंग्वेज में डब्ड जो है ना उसकी डबिंग जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल होगी मल्टीपल लैंग्वेज में। उसमें इंग्लिश है, उसके बाद जैपनीज है, कोरियन है, अरबिक है, डच है। उसके मल्टीपल अराउंड 20 लैंग्वेज में हमारे शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल जो है ना वो होंगे। तो ये भी हमारा जो है ना अपडेट है। तो उसके बाद हमारा एफिलिएट प्रोग्राम भी है। साथ में कोई भी क्वेश्चन है आप जो है ना पूछ सकते हैं। तो चैट पे आप पूछ सकते हैं या माइक ओपन करके आप जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्री प्रोग्राम भी है, हमारे जॉब रेडी ट्रेनिंग्स हैं, और आप उनको आगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट को, अपने ग्रुप में आप शेयर करते हैं, तो आपके थ्रू जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड करेगा तो पर स्टूडेंट आपको 500 रुपीज़ का रेफरल बोनस मिलेगा। तो अगर आपके थ्रू कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुआ तो आप ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन का यहाँ फॉर्म है, इसको आप क्लिक करें, यहाँ के पास फॉर्म ओपन होगा, इसको आप फिल आउट करें। आफ्टर वेरिफिकेशन आप लोगों को जो है ना वो पर स्टूडेंट 500 रुपीज़ का रेफरल बोनस मिलेगा। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप कॉन्टैक्ट में जाएं, और ये आप जो है ना वो ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि मैंने इस तरह मेरे थ्रू एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुआ है, इसकी ये इन्फॉर्मेशन मैंने फॉर्म फिल कर दी है, तो आप जो है ना वो इसको जो वेरीफाई कर लें। जी अब्दुल रहमान भाई, क्या क्वेश्चन है आपका जी? सर अगर सर इंटर्नशिप के बारे में पूछ रहा हूँ सर। जी जी पूछना है सर, अगर 1 महीने से ज्यादा हो गया और हमने हर रोज कमिट भी किया है और वो स्टैक में अपडेट भी करवाया है, तो उस पे लिखा होगा स्टार्ट डेट और एंड डेट? किस पे लिखा होगा? इंटर्नशिप पे। नहीं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट पे या किसकी बात कर रहे हैं? हाँ नहीं, सर्टिफिकेट पे जो है ना वो ऐसे लिखा नहीं होगा कि स्टार्ट डेट और एंड डेट। हाँ, ये लिखा होगा कि आपने इंटर्नशिप 1 वीक की या 1 मंथ की आपने तो की ये है, लिखा 2 मंथ होगा की। ये अगर वो 6 वीक की है ये लिखा होगा, लिखा होगा। लिखा होगा, ठीक है जी जी जी। सो किसी और का कोई और क्वेश्चन है? एनी स्टूडेंट एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, सो यू कैन आस्क प्लीज जी। किसी और का कोई और क्वेश्चन हो, कोई और सवाल आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारा ये जॉब पोर्टल का यहाँ ऑप्शन भी है, तो इस पे जाएंगे जॉब पोर्टल पे, तो लेटेस्ट हमारे पास लास्ट 7 डेज की जो हमारे पास लिंक्डइन पे और इंडीड पे जो जॉब्स आ रही हैं, तो आप क्लिक करेंगे डेवऑप्स इंजीनियर, तो उसके बाद लिंक्डइन जॉब्स पर क्लिक करेंगे तो डेवऑप्स इंजीनियर टाइटल से जितनी भी जॉब्स हैं लास्ट 7 डेज में पूरी दुनिया की, तो वो आपके पास यहाँ ओपन हो जाती है। फिलहाल यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स हैं, तो अगर आप यहाँ लिखें वर्ल्ड वाइड तो आपके पास जो है ना वो पूरी दुनिया की जॉब्स ओपन हो जाएंगी। तो ये बेसिकली लिंक्डइन पे है, तो आपको जो है ना वो लिंक्डइन को अकाउंट ओपन करके फिर आप जो है ना वो जॉब दे सकते हैं।
इस तरह क्लाउड इंजीनियर है, आप लोग ने जॉब पे क्लिक करें तो आपके पास क्लाउड इंजीनियर 3 पोजीशन है यूएस के अंदर। यहाँ से आप मुल्क को चेंज कर सकते हैं या वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं, तो यहाँ आपके पास ओपन जो है ना वो हो जाती है। इस तरह इंडीड है, इंडीड की जॉब भी आपके पास जो है ना वो लेटेस्ट आ रही है लास्ट 7 डेज की, तो ये भी आप जो है ना वो कर सकते हैं लेटेस्ट। तो इसमें ऊपर ऑप्शन आता है कंट्री का, तो वहाँ से जो है ना आप कंट्री पाकिस्तान, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, इसमें आप जॉब फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो आप जो है ना वो इजीली जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जॉब जो इंटर्नशिप की कम्युनिटी भी है, तो आई थिंक आप लोगों ने उसको ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया हो तो आप लाजमी उसको ज्वाइन करें। हमारी वहाँ भी पूरी दुनिया की, पाकिस्तान की भी, उसके बाद हमारे पास इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान से स्टूडेंट नहीं है बल्कि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स जो है ना वो मौजूद हैं, मल्टीपल कंट्रीज से। मल्टीपल कंट्रीज की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें जो हमारी जॉब इंटर्नशिप का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर जो है ना वो हम अपडेट जो है ना वो करते रहते हैं। तो इसी तरह ये इंडीड है, यहाँ भी आप जो है ना वो अपनी जॉब फाइंड आउट जो है ना वो कर सकते हैं और यहाँ से भी आप जो है ना कंट्री चूज कर सकते हैं। अभी आई थिंक इसमें यूएस सिर्फ जो है सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ से आप कंट्री जो है ना वो चेंज भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे इंशाल्लाह मल्टीपल कंट्रीज के ऑप्शन भी अभी आ जाएंगे। अभी फिलहाल ये यूएस है, लेकिन मल्टीपल या कंट्रीज के भी ऑप्शन आपको कीनिया है, श्रीलंका है, नाइजीरिया है। हमारे पास जो इंटर्नशिप स्टूडेंट्स हैं वो नाइजीरिया से हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका से है, सऊदी अरेबिया से है, कतर से है, इंडोनेशिया से है, श्रीलंका से है, इंडिया से है और पाकिस्तान से भी है और बांग्लादेश से भी है, अर्जेंटीना से है, अल्जीरिया से है, मल्टीपल कंट्री से जो है ना वो स्टूडेंट मौजूद है। जी कुछ और कोई और क्वेश्चन हो, कोई और सवाल हो वो पूछ सकते हैं जी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अभी इंटरव्यू का सिस्टम भी आ रहा है, तो वो अभी उस पर भी काम चल रहा है। वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अभी रिलीज हो जाएगा विद इन 1 to 2 months। इसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना वो लगेगा। तो इसके अंदर इनिशियली जो डेवऑप्स क्लाउड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वो इंटरव्यू की प्रैक्टिस जो है ना वो कर सकेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो जॉब रेडी ट्रेनिंग्स है उसके अंदर ये बिल्ड इन होगा। और इसके अलावा जो स्टूडेंट अलहदा हमारे इंटरव्यू प्लेटफॉर्म को जो है ना वो लेना चाहते हैं तो वहाँ मल्टीपल इंटरव्यूज की आप प्रैक्टिस जो है ना वो कर सकेंगे। उसमें बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। तो फिलहाल ये भी डेवऑप्स और क्लाउड की इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। फ्यूचर के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके बाद बैक एंड डेवलपर है, फिर मल्टीपल अदर पोजीशन हैं। तो उसके लिए भी हम जो है ना इसको ओपन जो है ना वो करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो अपना कैरियर डेवऑप्स में क्लाउड में बनाना चाह रहे हैं तो वो जो है ना वो अपनी इंटरव्यू की प्रैक्टिस जो है ना वो कर सकेंगे। अब यह है कि इंटरव्यू जो एक्चुअल इंटरव्यू उससे पहले जो है ना वो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम अक्सर स्टूडेंट्स हैं तो वो जो है ना आप ये वर्चुअल जो है ना आप प्रैक्टिस कर सकेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बिल्ड हो। तो आपको मैं दिखाया तो आप साथ बेसिक हमारा है, इस पर क्लिक करें स्टार्ट बेसिक में, तो इससे आ जाता है रेडी फॉर योर इंटरव्यू। आप इस पर क्लिक करेंगे Welcome to तो यहाँ दिखा Miseacademy देगा interview वेलकम टू platform. मिसेकेडमी इंटरव्यू प्लेटफॉर्म। Please click the button below. स्टार Great. इंटरव्यू पे क्लिक करेंगे Please get ready. और यहाँ जो है ना आपने Your first कैमरा लाजमी question अपना will ओपन begin in करना है, 30 माइक seconds. लाजमी ओपन करना है। Please set up your तो camera, mic, आपको and 30 सेकंड background. मिलते हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड प्लीज सेट अप योर कैमरा, माइक एंड बैकग्राउंड। मैंने कोशिश करनी है कि आपका कैमरा जो है ना क्लियर हो, आपका माइक ओपन हो, बैकग्राउंड आपका जो है ना अच्छा हो। कैमरा आपने लाजमी ओपन करना है, तो अदरवाइज जो है ना वो आप ना इंटरव्यू प्रोसीड जो What है ना is वो meant नहीं by कर सकेंगे। DevOps? ठीक है, And what is its तो अभी मेरा purpose? कैमरा जो है ना वो दूसरी जगह यूज हो रहा है, तो अगर मैं इसको क्लोज कर दूं अपने कैमरा को तो आपको शायद फिर यहाँ नजर आ जाए। ठीक है, तो मैं दोबारा रिफ्रेश करता Welcome हूँ। to Miseacademy in. Great. Please get ready. Your ठीक first है, सवाल question will क्वेश्चन begin आप in पूछ 30 सकते हैं, seconds. चैट पे पूछ लें या Please set up your camera, आप जो है mic, ना and background. वो माइक ओपन करके पूछ लें जी। तो अभी इंशाल्लाह ये भी हमारा प्लेटफॉर्म आ रहा है इंटरव्यू का, जिसके अंदर मिनिमम अमाउंट जो है ना वो आप पे करेंगे। तो उसके अंदर जो है ना वो आप What is meant by तकरीबन 10 से DevOps? 20 And what is its purpose? इंटरव्यू से जो है ना वो आप इंटरव्यू जो है ना कर सकेंगे। तो इस आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपका माइक काम कर रहा हो तो अब मिसाल तौर पे ये
आ गया व्हाट इज मेंट बाय डेवऑप्स एंड व्हाट इज इट्स पर्पस। ठीक है, तो आप जो है ना वो स्टार्ट करके फोन पे क्लिक करेंगे, आप जो है ना बोलना जो है ना वो शुरू करेंगे। तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन यहाँ रिकॉर्ड होना जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। तो भाई मेरा माइक बंद है लैपटॉप का, तो इसलिए जो है ना वो यहाँ लिखा नहीं जा रहा, प्लीज वेट करें। What are the differences between DevOps and Agile? What is the role of configuration management? अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो अभी मैं आपको एक डेमो जो है ना वो दिखा देता हूँ, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जी। इसे माइक ओपन करके जो है ना वो आप जो है ना अपने क्वेश्चन जो है ना वो रिकॉर्ड जो है ना कर सकेंगे। और आपके पास हर क्वेश्चन का 1 मिनट आपको जो है ना मिलेगा, 60 सेकेंड्स। उसके अंदर आपने रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है ना वो सबमिट हो जाएगा आफ्टर 1 मिनट। तो आपके पास डिटेल फीडबैक जो है ना वो यहाँ शो हो जाता है। उसमें यह है कि आप सिर्फ माइक में बात कर सकेंगे, टेक्स्ट आप नहीं लिख सकेंगे, सिर्फ माइक में आपने बात करनी है। अब मैंने बेसिक आंसर जो है ना वो रिकॉर्ड किए, उसने जो है ना वो डिटेल इंटरव्यू फीडबैक रिपोर्ट जनरेट जो है ना वो कर दी है। इसमें आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो 20% है। इसमें टेक्निकल नॉलेज आपकी जो है असेस हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, ट्रबल शूटिंग स्किल, बिहेवियल स्किल, सिक्योरिटी अवेयरनेस, जॉब रेडीनेस। और हर क्वेश्चन को जो आंसर दिया उसके यहाँ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, आपने क्या आंसर दिया वो ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप किस तरह आंसर को अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी इम्प्रूव आंसर यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या क्या आपके मसले थे, द लेंथ ऑफ द आंसर इज लिमिटेड एंड द की स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट वर नॉट एड्रेस्ड, रिव्यू मॉडल आंसर्स टू इम्प्रूव टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो टिप्स एंड सजेशन, इंश्योर यू मेंशन स्टेट फायर सिक्योरिटी एजुकेशन लेयर, ये आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक S3 सर्वर एन्क्रिप्शन टैग ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह जो है ना वो यहाँ जो है ना आपने ये आंसर दिया, उसके बाद ये इम्प्रूव्ड आंसर है, और इसने जो है ना क्रिटिक किया और टिप्स एंड सजेशन। तो ओवरऑल फिर आपका परफॉर्मेंस समरी भी आपकी आ गई, इतने पॉइंट्स आपने अर्न किए, ओवरऑल परसेंटेज जो है ना वो आपकी ये थी। अब इस पे काम हो रहा है, इसको और जो है ना भी इम्प्रूव जो है ना वो करेंगे। तो अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। ये भी इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में ये भी हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना वो आ जाएगा जी। किसी और कोई और क्वेश्चन है, कोई और सवाल है, पूछ सकते हैं जी। जी उमेर भाई। बाकी हमारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा उमर भाई, मेरा ये क्वेश्चन था कि हमारे पर मैं इंटर्नशिप से हूँ, तो ठीक है। इंटर्नशिप के अंदर हमारे पास जो पोर्टल खुलता है उसमें वीडियो का एक ऑप्शन होता है, एक डॉक्यूमेंट्स का होता है जिसमें सारी हमारी क्यूरीज होती हैं। ठीक है। सेकंड होता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पे कोई चीज़ आती नहीं है कि हमने क्या, हमारी क्या कारकर्दगी रही। हम लोग जैसे जितने भी इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स हैं जी वो सक्सेसफुली टास्क कंप्लीट तो कर रहे हैं, जी लेकिन
यानी कि किसी और जगह बैठ के हम लोग टास्क कंप्लीट करते हैं। अब हम जी उसमें जेमिनी की भी हेल्प लेते हैं, चैट जीपीटी की भी हेल्प लेते हैं। ठीक है। तो उसमें जो हमारी स्किल्स जो है तो उसमें एमसीक्यूज में क्लियर होंगी ज़्यादा। एमसीक्यूज का पोर्टल इसमें नहीं है ओपन। जी एमसीक्यूज का नहीं है, एमसीक्यूज का नहीं है, आपके पास सिर्फ वीडियो और जो आपका टास्क की डिटेल है वो डॉक्यूमेंट में जो है गिवन है। एमसीक्यूज नहीं है ये पता नहीं क्यों शो हो रहा है, ये हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म में कुछ एरर है, शो नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है ना वो सेट करेंगे, तो उसमें आपकी जो एवेल्यूएशन है ना, जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बेशक आप एआई की हेल्प कर रहे हैं, उसमें आपको काफी, अभी तो आपके टास्क इनिशियल टास्क है तो वो इतने मुश्किल नहीं है। आगे आप जाएंगे तो आपके पास डिफिकल्ट टास्क होंगे, आपके पास टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये टास्क कंप्लीट करने में। आप बेशक एआई की हेल्प लें, क्योंकि इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वो लोग चाहिए जो कि एआई को एफिशिएंटली यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, अगर आप यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। तो आपकी जो जजमेंट है और जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, जो आउटकम्स है, वो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं स्लैब पे, आप डॉक्यूमेंटेशन आप बना रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन। जी मैं डॉक्यूमेंटेशन हर टास्क की मैं डॉक्यूमेंटेशन भी एक अलग बना रहा हूँ, हाँ, तो क्योंकि उसके मैंने बाद अभी पोस्ट नहीं किया वो किसी जगह। यानी कि मैं डॉक्यूमेंटेशन ठीक, कोई अपने मसला जीमेल के ऊपर बना रहा हूँ। नहीं। ये जी अभी अभी फिलहाल हमने उसको, जो हमारे इंटर्नशिप के स्टूडेंट उनके लिए हमने मस्ट इस चीज़ को नहीं किया, वो ऑप्शनल है। लेकिन फ्यूचर में जो हमारी इंटर्नशिप होगी उसके अंदर डॉक्यूमेंट भी आप लोग जो है ना वो अपलोड करेंगे। उसके अलावा फिर गिटहब की जो रोजाना की कमिट हिस्ट्री है उसको आप डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप रोजाना पोस्ट कर रहे हैं, उससे आपकी जो है ना वो जो प्रोफाइल बिल्डिंग गिटहब और लिंक्डइन से आपकी प्रोफाइल प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत हो रही है। और डॉक्यूमेंट और रिपोर्टिंग से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी इम्प्रूव हो रही है। बाकी स्टैंडअप मीटिंग में आप जो है ना वो ज्वाइन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप जो है ना वो पूछ रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस को शेयर कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी वहाँ जो है ना वो हो रही है। मैं तो काफ़ी दफ़ा जी मेरे साथ हुआ है सर। सर ये होता है काफ़ी दफ़ा मैं स्टैंड अप मीटिंग ले ही नहीं पाता। जी जी मैं 7 साढ़े 7 बजे ऑफिस से मूव होता हूँ, तो मुझे वापसी में लेट हो जाता हूँ और जी जी पहुँचते-पहुँचते तो मीटिंग निकल चुकी होती है। तो कोई मसला नहीं। आज मैंने मीटिंग तो आपने लाइन अप की तो मैं अटेंड कर सका। ये कोई मसला नहीं। अच्छा, अभी अभी आप जो है ना वो जॉब कर रहे हैं या उम, स्टूडेंट है? नहीं, नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अच्छा साइबर सिक्योरिटी में होता हूँ। बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो कितने साल आप हो गए? मुझे तो जॉब करते हुए मैं तो 2007 से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप सही है। मेरी तो क्या, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है अच्छा अच्छा अच्छा, और मैंने ये डेवऑप्स वगैरह की सर्टिफिकेशंस ली थी, ठीक है लेकिन हैंड्स ऑन नहीं रहा और मुझे जॉब कहीं मिली नहीं, तो मैं साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव हो गया। तो ठीक है। मेरे पास फिर ईमेल आई आपके पास मैंने काफ़ी टाइम पहले अप्लाई किया था, तो मेरे पास अच्छा अच्छा अभी अच्छा ईमेल आई। अच्छा। तो मैंने कहा क्योंकि एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल तो ऐसी है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया दोबारा। बेहतरीन है, सही है। वो साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में अब मुझे लग रहा है कि इसकी भी बहुत ज़्यादा वर्थ है डेवऑप्स की। आगे नहीं नहीं, ये जितनी भी सिक्योरिटी के टूल है वो अभी क्लाउड पे मूव कर रहे हैं और सिक्योरिटी भी एज अ कोड आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी हमारा एक और कोर्स अभी आने वाला है इस साल के एंड में, तो वो डेवसेकऑप्स का कोर्स होगा। और उसके अंदर डिटेल में जो क्लाउड की सिक्योरिटी है, उसके बाद सिक्योरिटी की अवेयरनेस है, माइंडसेट है, उसके बाद जो डेवऑप्स और क्लाउड, जो डेवऑप्स की पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं, क्यूबरनेटीज कंटेनर्स जो है ना वो रन हो रहे हैं, तो उसके अंदर जो उसकी सिक्योरिटी है, उसमें कौन कौन से टूल जो है ना वो यूज हो रहे हैं, तो वो जो है ना वो डिटेल में जो है ना वो हम सीखेंगे उस ट्रेनिंग के अंदर। तो उसके अंदर ये हमारा भी इस साल के एंड में, अगले साल के स्टार्ट में हमारा पूरा जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारा पहले बेसिक जो है ना कवर हो रही है, उसमें साइबर सिक्योरिटी की बेसिक्स हैं, उसके बाद लिनक्स एंड नेटवर्किंग की बेसिक्स में क्या सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, उसके बाद फिर डेवसेकऑप्स में फाउंडेशन है, उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और जो सिक्योर हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसमें क्या फर्क है, शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच क्या है, सास डैश एससीए ये क्या है, डेवसेकऑप्स पाइपलाइन का वर्क फ्लो जो है ना वो क्या है। उसके बाद फिर CI/CD एंड गिट सिक्योरिटी, तो गिट में बेसिक सिक्योरिटी क्या है, ब्रांच प्रोटेक्शन रूल जो है, सीकर लीक की प्रिवेंशन है, ये मल्टीपल या
सीखेंगे। उसके बाद फिर कंटेनर्स है, क्यूबरनेटीज है, उसमें सिक्योरिटी कैसे आप इंटीग्रेट करेंगे, क्यूबरनेटीज है, कंटेनर्स है। इसके बाद क्लाउड की सिक्योरिटी है, उसमें AWS में जितनी भी सर्विसेज है सिक्योरिटी की, वो आप जो है ना वो डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद अज़ोर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसमें लेके आए। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। उसमें जो है ना कहाँ का सिक्योरिटी है, उसको आप कैसे जो है मैनेज जो है ना कर सकते हैं, पॉलिसी एज अ कोड। उसके बाद कंप्लायंस, और उसके बाद फिर सीक्रेट्स एंड आइडेंटिटी सिक्योरिटी है, कैसे आप रोटेट करेंगे, जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या है, IAM सिक्योरिटी प्रोजेक्ट क्या है। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स, वो आप सही करेंगे सही। डिटेल में। कंप्लायंस है, गवर्नेंस है, उसमें हम एक एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, SOC 2 है, ISO 2001 है, तो उस पे कैसे आप रियल टाइम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, GDPR है। फिर के बाद कंप्लायंस एज अ कोड, हमारी जो पूरी की पूरी पाइपलाइन है डेवऑप्स की, तो उसके अंदर हम कैसे इसको इंटीग्रेट करके कंप्लायंस एज अ कोड, पॉलिसी एज अ कोड, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी हर जो है ना वो स्टेज पे चेक जो है ना वो लगा हो। तो विदाउट जो है ना वो कंप्लायंस और पॉलिसी अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय ना हो, प्रोडक्शन में जाए ना। उसके बाद फिर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिक्योरिटी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी है उसमें कैसे आप कंटेनर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक्स हैं, क्यूबरनेटीज अटैक्स हैं, ये आप करेंगे। उसके बाद फिर मॉडर्न सिक्योरिटी में सप्लाई चेन सिक्योरिटी है, एसबोम है, SLSA फ्रेमवर्क है, डिपेंडेंसी अटैक्स हैं। उसके बाद फिर एंड में पूरा प्रोजेक्ट है जो कि इंटर्नशिप में हम करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में एंड टू एंड, तो ये हमारे चला भी साल के एंड में, तो ये भी हमारा इंशाल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है। तो फिर आखिर में एक प्रोजेक्ट होगा, सिक्योर मल्टी टायर SaaS प्लेटफॉर्म, जो एंड टू एंड जो है ना वो सिक्योर जो है ना वो करेंगे। तो ये भी हमारा इंशाल्लाह इस साल के एंड में, उम्मीद है या अगले साल में ये रिलीज हो जाएगा। तो अभी सिक्योरिटी जो है ना एज अ कोड आ रही है, तो इसलिए जो है ना वो जो क्लाउड की सिक्योरिटी है, डेवऑप्स की, और सिक्योरिटी एज अ कोड कैसे काम करती है, तो वो सीखना अभी जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ अभी ऐसा ऐसा क्लाउड की तरफ जो है ना वो माइग्रेट जो है ना वो कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, तो उसके अंदर भी चीज़ें काफ़ी रहेंगी, लेकिन इतने भी अभी जैसे कंप्लायंस के जो स्टैंडर्ड है उनका जो ऑटोमेटिकली चेक है, उसके बाद पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की हुई है, आपने मल्टीपल रोल्स बनाए हुए हैं, उसकी ऑटोमेटिकली आपने उसको चेक करना है हर स्टेज के अंदर। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन कोड है वो डिप्लॉय हो, इससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप ऑटोमेट कर रहे हैं, तो वो भी जो है ना प्रॉपर कंप्लाइंट हो, वर्जन कंट्रोल्ड हो, ऑडिटेबल हो, ताकि आप इजीली उसको जो है ना वो हर चीज़ को आप ट्रैक जो है ना कर सके, और हर चीज़ आपकी ट्रांसपेरेंट हो, और हर चीज़ आपकी जो है ना वो ऑडिटेबल हो। तो इंशाल्लाह इस साल के लिए भी हमारा आ जाएगा जी। जी, तो मेरे पे कोई और क्वेश्चन है जी आपको? नहीं नहीं सर, बस सिक्योरिटी से रिलेटेड आपने मुझे चीज़ें बताई हैं। अभी हमारा हमारा भी एक एजेंट है, यानी कि सर्प से रिलेटेड, क्योंकि मैं उसमें सिक्योरिटी के अंदर हूँ, तो हमारी कंपनी ने सही है, एक एजेंट तैयार किया था। तो बेहतरीन है। उस एजेंट का ये काम था कि वो जितने भी वेनरेबिलिटीज जो हैं जी जी, वो निकाल के लेके आता था और ठीक है, बताता है कि इस वेबसाइट्स में यहाँ पे ये बग्स हैं। तो सही एआई है। एजेंट अब वो रिस्पॉन्स जाके, यानी कि आप किसी को भी ऑडिट करवाना हो तो वो जी जी, सिक्योरिटी जाके एजेंट खुद चेक करता था, क्योंकि अभी बेहतरीन। अभी ह्यूमन करता है। तो एजेंट को पूरा ट्रेन किया गया, तो एजेंट ने अब जाके पूरा, यानी कि जो एक ह्यूमन कर रहा होता था, एजेंट उससे ज्यादा अच्छा फास्ट काम कर रहा है। जी जी, ऐसी है। तो ये तो बिल्कुल ऐसी है। यही वाली सिक्योरिटी आएगी फिर। तो उसमें ये ना कि अगर आपकी फाउंडेशन किसी भी चीज़ क्लियर है, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, तो फिर तो आप AI को यूज़ करें। जेनेटिव AI है, एजेंटिक AI है, आप जो है एजेंट बनाए तो तकरीबन 70-80% काम वो कर देगा, और उसके बाद जो 10-20% रह जाएगा, 30% वो जो है ना वो ह्यूमन का काम है कि ह्यूमन जजमेंट करनी है, उसके बाद जो उसको रिव्यू करके एनालाइज करके उसको प्रोडक्शन में भेज देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सिक्योरिटी की वनएबिलिटीज हैं जो कि एजेंट निकाल रहे हैं, तो वो हम्म। आपने खुद रिजोल्व करनी है, या उसके बाद जो एक एजेंट ने निकाल दी वनएबिलिटीज, तो दूसरे एजेंट को आप कहेंगे इसको रिजोल्व कर दें।
लेकिन जो प्रोडक्शन में जो कोड है उसमें कोई मैनिपुलेटिव है तो डायरेक्ट आप एजेंट को नहीं कह सकते, वो काफ़ी चीज़ें आपकी डिलीट और रिमूव भी कर सकते, तो वो आप सही। उसको नहीं कह सकेंगे। उसको हर चीज़ की एक्सेस नहीं देनी भी नहीं चाहिए। अभी जैसे AWS का लास्ट ईयर केस हुआ, उसके बाद गिटहब की काफ़ी रिपोजिटरीज जो है ना वो लीक हो गई, इसका मल्टीपल अदर वेबसाइट है उनका भी डाटा लीक हो गया। तो इसकी वजह क्या है कि उन्होंने एजेंट को एक्सेस दे दी सारी, तो एजेंट ने जो है ना वो कोई लाइब्रेरी यूज़ कर ली, कोई डिपेंडेंसी यूज़ कर ली जो जो है ना वनरेबल थी, पुरानी थी, वो जो है ना वो डाटा लीक हो गया डेटा लीक या हो उस गया। फाइल की एक्सेस जो है ना वो चली गई। इसलिए इसलिए जो सिक्योरिटी इंजीनियर है या डेवऑप्स इंजीनियर है, तो उसका एक काम है कि उसने प्रॉपर पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है, रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, ताकि जो पूरी टीम है वो उसको जो है ना वो फॉलो जो है ना वो कर सके यार। सही So सर। so this is our new DevSecOps course is coming soon, maybe in this year or next year it will come, and the A interview system also coming. The feedback report you can get from the interview system as well. So it evaluate the technical knowledge, problem solving ability, practical experience, communication skill, confidence level, troubleshooting skill, behavior skill, security awareness, job readiness. So it will coming soon, maybe within 1 to 2 months. So A interview system will also come. So if you understand the English language, even you are from Pakistan, other country, so you will able to take the multiple interviews. You pay minimum per month minimum fees, but multiple interviews you can take, and your confidence level become more increase and increase. Okay, so any student, any question, any query, so you can ask please. जी किसी को क्वेश्चन है, कोई सवाल है, पूछ सकते हैं जी। Yes, Ejoma, yes, please. Any question, any query, any comment? I have a question. I don't know if it has been covered because I'm just joining in now. Right. For the project, the project I chose is the e-commerce. But then Right. in tax 3, I noticed that tax 3 through to tax 7 is Docker. But then the e-commerce already has Docker in it. So what am I expected to do? To pick another project or to tax myself to writing those files and just moving on with it? Yeah, so if the Docker file is currently fine, for example, in your e-commerce application, the written Docker file is working fine. The Docker Compose file is working fine. Then you don't need to create another new one. You can go ahead to task 5, task 6, and task 7 and task 8. You can start from there. It's fine. Okay, noted. Yeah. Thank you. Yeah, welcome. But if there is any change you want to do, or there is needed to change something, so then definitely you do some change in the Docker file or Docker Compose file, and then commit those changes in your repository, and then move forward. So maybe the application code is little bit old one. So then maybe you should need maybe some kind of changes is required. If there is no change required, it's fine. You can go ahead and start from the task 5, 6, and 7. Yeah. It's okay. Duly noted. Thank you very much. Well done. Okay, any other question, any other query anyone has? Okay, so Miss Ejoma, so you are from Nigeria? Yes, I am from Nigeria. Okay, so are you a student or currently working professional? A student. In which year? At master's level, I'm done with my first university degree.
Okay, okay, you are doing master currently. Yes. Okay. So where you have learned the DevOps and cloud? Okay, first I learned with Digital Witch. Digital Witch is a Nigerian, so she hosts about 5 months training. So Right. after that, yes, after that I'm learned with the DevOps micro internship that's Right. Pravin Mishra on LinkedIn Okay. handles. And then it was at the point where I was learning with him that I came across this one and I applied for it. So those are the two places that I have learned DevOps. Very good. Very good. So after master, you want to pursue your career in DevOps or cloud field or any other field? No, DevOps. Okay. So in Nigeria, how many institute they are that are teaching the DevOps and cloud? Currently, I don't even know anyone actually, but I have not researched to know if Ah, there is like a university or if there are schools here that have hmm. entrenched the DevOps, the cloud computing DevOps engineering course. But I know that cybersecurity does exist like that. So maybe I would just continue with my, if I don't find like is a university structured learning, I would just Okay. continue with building projects and then taking internships like that So in until your something five real comes through. Okay, so in your 5 month DevOps and cloud training, so this training was online or which country the institute was? Okay, the first, all of them has been online. The first one Ah, was 5 months, 4 months training, 1 month project. It was online. And then the okay. second one was also 5 months. That's 4 months training, 1 month project. It was also online. And then this one too is online. Okay. So the previous two was paid training, or this was that was the unpaid. Sorry, I didn't get that. Your last two previous training was paid training, or that was unpaid. Oh, okay. The first one was paid training. The Right. DevOps micro internship with Pravin was not paid. It was free. Okay, and in your 5 months training, so uh, which topics you have learned in DevOps and cloud? I have literally covered every topic from Terraform to Ansible to Kubernetes, Docker. Um, okay, I think uh, Jenkins, I didn't learn, but then during the project, it was somehow integrated. And then also monitoring. I did monitoring. I covered everything so far. All the tools, all the DevOps tools so far. Mhm. Okay. Okay, so unfortunately, currently our trainings are only in Urdu language, but we will start in English as well. But I will share with you the topics that we are covering in our job ready trainings. So this is the start. So in our first month, so our job ready trainings are a 6 months training and 1 month internship we will give to the students. So in first month, we will start from the very basics, start from the foundation, what is computer, server, operating system, then networking fundamentals, then introduction to cloud computing, software apps, infrastructure, and the first 2 weeks are the uh, foundation course, the prerequisites for the DevOps and cloud. Then we start from the Linux, start from the very basics to the advanced level, and then we start from the bash scripting. So then containerization with Docker. So two-tier application, three-tier application we will include, and mostly Django, Django framework, Flask, and Merge stack we covered in our
trainings. And then after that CI/CD pipeline with Jenkins, and in Docker containerization, so we covered AWS services like AWS ECR and ECS Fargate, and how to secure Docker file and container. And then CI/CD pipeline with Jenkins from very basics to the advanced level. Then Kubernetes. So in the Kubernetes also from 2-tier application to 3-tier and multi-tier with the config map, secrets, management probes, stateful setup, persistent volume, ingress controller, Helm charts, Argo CD, GitOps, EKS cluster, then Ansible, and then later on AWS networking and security, how you can create the whole infrastructure that is secure and scalable. Then same infrastructure, how can we create with Terraform, so detailed Terraform course with practical guidance, practical labs, and then you will learn the monitoring tools, CloudWatch, Prometheus, Grafana, then how to design the AWS compliant architecture, backup and disaster recovery plan, implement AWS cost optimization, and then Azure Cloud last 1 month. So Azure Cloud services will also include it. Virtual machine, storage account, ACR, Azure Container Registry, databases, networking, load balancing, auto scaling, Intra ID, Kubernetes service, monitoring, and Key Vault, and then internship. So this is the our whole training programs of 6 months. So currently only in Urdu, but we will try. Our team will try to also start in English. So maybe in the future, maybe next year, we will start in different African countries as well, like in Nigeria and South Africa, or maybe any other countries, maybe Egypt as well. So next year we will launch our trainings in English. So in our trainings, more than 100 labs are there, and the main uniqueness of our trainings are we will give you the real AWS account. So if I can show you our portal. Please wait for a while. Yeah. So this is our training portal, same like we already gave you the internship. But here is one another feature is AWS Cloud account. It is integrated. Okay. It is integrated with our portal. You just need to click to log into AWS. Your account will be created within 20 seconds. You just click log into AWS. So within 20 seconds, your AWS account will be created. You don't need to sign up to the AWS account. Sometimes if you sign up to the AWS, there are some error, many errors. You cannot sign up to the AWS, but with our LMS portal, within one click, within 20 seconds, your AWS account will be created with your own ID. So basically, it is the shared account. In every badge, we will give, for example, 10 to 15 students. They are using this AWS account. In the front, this is your own account, but on the backend side, there are multiple accounts, but you can use multiple services there, which are teaching in our training: EKS, ECS, EC2, Secrets Manager, RDS, DynamoDB, VPC, public and private subnets you can do. And so this is the uniqueness of our. So mostly in online training, even in on-site, in all over the world. So I think no institute can give the AWS real account to you. They can give the AWS CLI, but they cannot give the AWS console. So the Miseacademy provide the real AWS account. Just click here and you can easily log into AWS within 20 seconds. Your account will be set up. So currently we are giving only 50 hours per month. You can track your time here. On the monthly basis, we will give the only 50 hours.
and you can see the remaining monthly hour, daily used, and the secrets credentials you can access from here. So one time you log in, so 1 hour you can use this account, and then automatically it log out. No problem, it's okay. You can again log in to the same account easily. So after 3 hours, you created many resources like EC2, S3 bucket. So after 3 hours, your all resources will be deleted and terminated automatically. So hopefully in coming next year 2027, we will launch our trainings in English in all over the world, maybe in especially in African countries, Nigeria and Egypt, and in the South Africa as well. It's all good, sir. Well done. I like particularly the uniqueness that you have integrated AWS automatically into the portal. This eliminates all the bottlenecks that people like us encountered while we Yeah, were trying to create yeah, our yeah, AWS accounts. yeah. So this is awesome. After this training, I would hopefully remain in the society and the community and see how that goes. And I could take advantage of it when you finally launch in English. Well done. Yeah, yeah, definitely. So we will share in the community as well. So when our course in English will launch, so then we will share in the community as well. Okay. Okay. So one more suggestion I want to ask from you. So regarding the discussion, the students now in the internship, there are many students all over the world currently. So currently you are communicating on the WhatsApp. So it is fine to communicate on the WhatsApp, or need to create like Facebook group or Discord community. So if any suggestion can you share? Okay, now it depends on how you want to structure the English learning. I do not know so far how the Udu learning it's going, but I feel that it all depends on how you want to communicate. With Okay, WhatsApp, you easily get to a lot of people at the same time. But if you say move to Discord, the truth is some persons forget to check Discord or okay. Telegram Yeah. but everybody comes on WhatsApp at least more than 5 times a day. Okay. Or even Okay. more. But then if you move it to Discord, gives you like everybody is in one space, right? But Yeah. then if everybody is in one space and 50 persons get information against 500 persons, but then on WhatsApp 300 to 400 persons get that same information immediately, then you're better off on WhatsApp. And that is one. Okay. And secondly is for the training, for the internship, would it be cohort based, or would there be like self-paced learning too? Now, if it's cohort based, it means that you have a control of the learners at a particular period of time, which also means that a particular WhatsApp group could be created for this particular cohort. And also, do you have like number limits to a particular cohort, or it is open generally, like I don't know. So if you are able to answer these questions, then you now know, okay, should we continue with WhatsApp or should we move to other platforms? Okay, understand. Okay, so yeah, it's a great suggestion you gave. So in Nigeria also, I think mostly people they are using the WhatsApp, right? Yes, it is the fastest for most of us. It doesn't mean we also still use Telegram. We also use Slack. We also use Discord. I use all these things, but like I said, it's easier. Right. I easily access WhatsApp. I make a Okay. mental note to check my Telegram. I make a mental note to check Discord, but WhatsApp is just the easiest and fastest. Yeah. Okay, understand. Yeah, that's why
So that's why our Miseacademy major community is on the WhatsApp. So for every cohort, for every batch, so we have dedicated community. Like for internship batch 3, we have dedicated WhatsApp group. For the batch 2, another we have the dedicated WhatsApp group. So but after when completing the internship, so the alumni or graduated student from the internship, so where they can join. So another community I have also shared with you as well. I think already I shared the link on the community as well. So I think at that community is fine. So all of you, the alumni and graduate student, they can join there as well. Yeah, I saw the sharings. Thank you so much. Okay, thank you very much. Okay, any other student has any question, any query? So you can ask, please. I think Okay. it's just us. I don't think Yeah, yeah. there's another Okay. person. Okay. So one more last I need to ask. It's okay. I want to ask some more suggestion. Okay, go ahead. If you Okay. have questions, to ask. So yeah. So if Miseacademy will launch our training in Nigeria, for example, so the working professional and student, especially the student of the university, so how much they can afford per month for the training? This one is and then the program would just be for 6 months. Yeah, for 6 months, but yeah, for 6 months, but the student after 6 months, student transfer themselves to the self learning plan where they can get all the recording for every month, and the labs documentation they can get, but they need to pay small amount after 6 months, but they can get Oh, the recording of all the videos and all the lab document, but without AWS account. okay. While you were sharing that, I wanted to ask, I don't know, I forgot, but now that I remember, why you shared like the breakdown of the course outline for the 6 months training. I didn't see like in between projects. Wouldn't there be projects to practice so that they would practice what they learn? Or would the project only be for the last month, which is like the capstone project? I want to know. Okay. Yeah. So basically, the training is designed totally practical. So what does it mean? That initially 5 to 10 minutes, the theoretical concept terminologies we are going to use in this class, and then after that, the whole class will be practical. For example, this is the bash scripting intermediate projects. So in this class, so you will do multiple scripts. So that is small project you will do. Project in between. Yeah, Okay, project in that's between. awesome. Yeah, projects in between, like automating the EC2 plus S3 setup via AWS CLI, which is the small project. And if you go more advanced in 3rd months and 4 months, so then you will create end-to-end project that is more bigger, like orchestration the 3-tier app on ECS, deploying a 3-tier application using Docker Compose, secure Docker file and Docker container. Same with the CI/CD pipeline with Jenkins. So in every tool, so we will cover the projects. So the project will start from the second or first class of the tool, and then we add multiple services in next class, like for example deploying a tool application on AWS. In next class, how you can integrate Docker volume and push the container, push the image on the container registry. Then
how can integrate the Docker network and use the GitHub container history, and then how to use the Docker multi-stage, same source code we use start from the second class, and then we commit the changes daily on the GitHub on same repository. And at the end of Docker, you have the one of the big project. Same goes to the Jenkins, same with the Kubernetes, and same with the Ansible, and then AWS networking and Terraform, and then and internship project. The capstone project is basically the internship project. We give you, like in the internship, we give only the application source code, the whole end-to-end tools, and the cloud services you will use by your own self. It's okay. Sorry, I skipped those. I just wanted to be sure that they were integrated. Now, that brings me to the pricing. Yeah. Since it would be a monthly pay for my country, Nigeria, to be able to reach most young people, Okay. I would suggest $5 per month. I know that it's may be little to you and all you have planned out, but considering the country's situation and the payment, the salary payments down here, $5 per month, which means for the 5 months, you're having $25. And then the last month should be project. So I don't think that somebody who have stayed through from first to the 5th month should be paying for the last month. So I think with the AWS account it is too much low. oh, 5. that's true. That's true too. Yeah. And like the practical we are giving to the student, because it is a job ready training. If someone do properly, create the LinkedIn post, get a profile, job assistant, and do practical multiple times, so they can easily secure some remote opportunity and on-site in Nigeria. They can easily get after do. So, but if the recording session, then I think it's okay. $5. Then it's fine. Yeah. Okay, so It's so in the online, so how much you have paid in your first training? how much is 80,000 to dollars? How much? $50. Okay, approximately $50 for the first one. And $50 per month or whole five No, months? no. All through the 5 months. Okay. Okay. Okay, great. Thank you very much for sharing. Yeah. I got a lot of information from you. Yeah, so I think, yeah, great information. Yeah, in Nigeria. And So this $50 was also we were allowed installmental payments anyway. yeah. So maybe when you now share it within, you can kind of integrate in your application so that people can do monthly. That way, it's not heavy all at once. If maybe you check the cost and you feel okay, $5 doesn't cut it because of all you're offering anyway. So that people could also be able to reach this. yeah, so is there any is there a lot of opportunity regarding DevOps and cloud in Nigeria, or not too much? There is, but the problem is with the salary. The salary is not encouraging. Yes. So in Nigeria, after 1 year of experience in
DevOps and cloud, how much salary in Nigeria? In Nigerian also okay. In Nigerian currency. Okay, Nigerian currency. It depends. Sometimes you're getting like 150,000 naira or 200,000 naira. Though it depends on the role, but interning, yeah, beginning points. Internship, you might not even get a pay, to be very honest. Wow. But then if you're just intro, you're just a junior DevOps, so you're getting like 200,000 naira or 150,000 naira. So So it's in really starting. not. Yes, for starting up, it's really not encouraging. Yeah. And then sometimes for the internship, they will tell you like when you are in a real company now doing real internship, not like the online project-based internship kind of. And sometimes you don't get paid. You'll be told that the learning you are learning is enough. So yeah, it's really not encouraging, bro. Yeah. Okay, currently in Nigeria, there is some microfinance banks are there or not yet? They are actually. You can use the credit card or debit card online. You can use in the international payment. So for the international payment, we have like the fintech banks. Okay. We have like the fintech bank where we can create the dollar account. So what you may do for your payment is integrate a dollar payment route. That works because we have lots of fintech bank that people can generate what is it called, a credit card on, and then load it up and pay whatever international payment make. Yeah. Great. Okay. Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you so much for sharing the great information. So it is very much helpful for our team as well to understand the whole situation in Nigeria and other countries. Yeah, great. Thank you very much. Okay, You're welcome. Yeah, I appreciate all that you're doing. It is not easy to, have this kind of initiative and then decide to share it with total strangers free of charge. Thank you so much for all your efforts, for all the times that you dedicate to see us through the entire program. I appreciate. So our Miseacademy mission is to basically empower the global workforce in the cutting edge technologies. So currently there are demand in the cutting edge technology like DevOps, cloud, security, DevSecOps, MLOps. There are requirement there. So, but the students, they don't have the practical knowledge that industry demand. They don't have the knowledge of the tools. Even in the university, they don't teach us the tool software that industry have demand. That's why Miseacademy come up this idea to fulfill this gap, not only in Pakistan, but all around the world, especially the developing countries like in African countries, other Indonesia, other countries. So this is our mission, our vision to empower the developing countries to learn the cutting edge technologies and also teach others as well. That's awesome. Another thing you may want to bring in, I don't know how the 6 months program currently works, is what is it called? Like people who hold the hands of the learners. It goes a long way to encourage them, to ginger them, to keep them on track. Yeah. What you could integrate. Yes. Okay, thank you very much. Thank you so much. Okay, so if any don't have any question, anyone has no question, so we'll conclude our today Q&A session. Thank you very much for joining everyone. So, and hope to see you on Monday in the stand-up meetings or in the class.
and see you. Thank you very much. Allah Hafiz. Bye bye. Thank you so much. Bye. Bye bye. Thank you.